mutual fund at HDFC Securities. Today, we are happy to host Mr. Shyamsunder, uh, VP and Institutional Portfolio Manager, Emerging Market with Franklin Templeton Asset Management uh, Limited. So, Mr. Shyamsunder has a rich educational background to start with. He has completed his Bachelor of Engineering degree from National Institute of Technology, Trichy, and he has completed his postgraduate diploma in management from IIM Bangalore. He holds a CFA charter. Apart from that, he has got very rich, uh, industry background. That is, he joined Franklin Templeton in the year 2009 as a research analyst and co-portfolio manager. So over the years, he has contributed in key investment decisions of Franklin Templeton, India Equity Fund Management Team. And to pursue new challenges, he also served as a CEO of Navi AMC, and then where he gained rich, deep in industry insights and experience on leadership. And so he returned back to Franklin Templeton in May 2023, and since then he has been managing this profile. So a warm welcome to you, Hari. I think we are positioned at the right place, and since last 3 months, especially post quarter 2 result, the market has come down from its high, and I'm sure our investors are looking forward. So what exactly, how it is going to pan out in next, what is next for the equity market, since we are already you know, expecting the third quarter result. So what is the, you can say, what is the outlook for the economy and the coming earnings? Over to you, Hari. Saju, thank you for that introduction. It's great to be here. Good evening to all the participants, and apologies for the slight delay because of technical difficulties. Um, Getting right to it, I think, as Saju has already said, it is very clear that we are in very interesting times. We have we've got to look at the world as a time of slight amount of uncertainty. Now, uncertainty is, as I like to think about it, slightly different from risk. Risk is something which is less quantifiable, and risk is more quantifiable, while uncertainty is essentially the point that we are looking at a lot of different outcomes which could take place, and but only one of them will take place. So selecting among those outcomes is why we believe that there is a bit more uncertainty in the world right now. A lot of it is stemming from what's happening in the US and the global backdrop of all the geopolitical conflicts. In India as well, an element of uncertainty has been added to our growth projections. While the growth was going pretty strong at above 7%, at about 7%, or 6.5 to 8% even, um, this quarter's GDP of 5.4% throws into question some of what our assumptions have been. But I think that this is not new for the Indian economy. We were here 7 quarters ago. If you remember, it was, I think, Q3 FY23, where we had a GDP print of about 4.4%, and a similar amount of questions were asked about what's happening with the Indian economy. But the Indian economy bounced back from them, and I'm pretty confident we'll do so in the future as well. But I'm getting a bit ahead of myself, so let me just start off with what the global economic trends are, and I'll lay that into how we should think about the coming year. It's very important to look at the backdrop of the global economic trends for the Indian markets. Well, actually, we can always make the case that it doesn't matter what happens in the US for the Indian markets, because India has its own story. But I'll just put it this way: that if the US markets are in a healthy shape and they are not misbehaving in a sense, then at least we are looking at a bit more, well, at least one thing less to worry about. So we start off with what happened last year. What really happened was that this is how
This is a chart which I used to put up at the start of the calendar year, at the start of CY24, and it says that, it said that out of the world's 10 biggest national elections, 7 are set to take place in CY24, and the blue wording really shows what has actually happened as a result of those elections. It is essentially that every single incumbent either lost or was materially weakened. The question is why, and the answer really is one common factor, which was inflation. Inflation has eaten into purchasing power of voters everywhere in the world, and as a result of that, they have voted asking for change. And if there's been so much change at the helm of every democracy last year, then we should expect that 25 will see the will of the people being implemented, and we have to figure out what kind of direction that it means. So a lot of the elections were, of course, in places like in US was the major one. We also had um, Europe as well, but ऐसे भी नहीं था कि it was just purely about developed markets. ये थोड़े हमारे देश में भी आई थिंक चुनाव हुए थे, एंड यहाँ पे भी आई थिंक एक मुद्दा ऐसे ही निकला कि द वोटिंग शेयर हैड the number of seats had fallen from the previous year. तो तो अभी इसका क्या नतीजा है? तो इसका यही नतीजा है कि यूएस में प्रेसिडेंट ट्रम्प आने वाले हैं, एंड उनका नजरिया बहुत हटके हैं. ही थिंक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज प्रेडिसेसर्स. उनके आइडिया, उनके सोच विचार में काफी बदलाव आ सकता है, कुछ अच्छे कुछ बुरे. तो अच्छाई में आई थिंक उनका जो अप्रोच है उससे वो कह रहे हैं कि वो वहाँ पे जो टैक्सेस है वो उसको काटेंगे, और डीरेगुलेशन की बात कर रहे हैं. तो इन दोनों की वजह से यूएस की वृद्धि में काफी तेजी आ सकती है. यू कैन हैव अ लॉट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी स्ट्रांग. वैसे भी आज के रेट में भी अगर देखेंगे तो फिर यूएस की जो इकोनॉमी है उसमें वैसे भी काफी तेजी चल रही है. इट्स वेरी स्ट्रांग इकोनॉमी, जहाँ पे लेबर ग्रोथ, वेज ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा है. सो वी थिंक दैट 2025 में भी ये जो ग्रोथ मोमेंटम है वो बरकरार रहेगी. आई थिंक एक दो दिन पहले फेडरल रिजर्व ने भी बेसिकली यही कहा है कि इन्फ्लेशन अभी भी ऊपर है वहां पे, और उसकी वजह से आने वाले जो साल में है, जो इंटरेस्ट रेट का जो एक्सपेक्टेशन था कि तीन तीन या चार बार काटेंगे, वो नहीं होगा, और सिर्फ शायद एक या दो का इंटरेस्ट रेट कट्स हो जाएंगे वहां पे. तो ये बुरी बात नहीं है. आई थिंक मार्केट कल या परसों यूएस मार्केट्स काफी डाउन थे इसको लेके, पर ये एक एक बार का एक एडजस्टमेंट है. मार्केट्स के लिए ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्केट्स के लिए ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ग्रोथ आया और इंटरेस्ट रेट कट में थोड़ी देरी आ गई, तो इट इज नॉट अ वेरी बैड आउटकम. इट इज नॉट अ बैड आउटकम बिकॉज अर्निंग्स ग्रोथ विल बी गुड. इट विल मीन दैट कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर कमिंग, और इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत ऑप्शंस रहेंगे. एंड आई थिंक ओवरऑल अगर देखेंगे तो फिर वैसे थोड़ी टाइम की बात है. इन्फ्लेशन वैसे भी मॉडरेट ही कर रहा है, एंड वी आर सीइंग दैट दिस इज अ बिट ऑफ अ डिले, नॉट अ कंप्लीट डिनायल ऑफ द इंटरेस्ट रेट कट्स. तो अगर ग्रोथ अच्छी रहेगी, एंड वी बिलीव दैट इट इज गोइंग टू बी अ गुड ईयर फॉर ग्रोथ in 2025, तो that is going to be a good backdrop, जिसका आई मीन जिससे एटलीस्ट इंडियन मार्केट में कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी. सो ऑन द ग्लोबल साइड यूएस की अगर बात करेंगे तो वी आर प्रीटी पॉजिटिव कि अगले साल काफी अच्छा रहने वाला है. कुछ नेगेटिव ऐसा कुछ एकदम नेगेटिव न्यूज़ जैसा नहीं लग रहा है वहां वहां से एटलीस्ट. अगर दूसरी बड़ी देश है की बात करें, वो है चाइना. चाइना की सिचुएशन थोड़ी अलग ही है. वो उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, एंड वहाँ पे कोई जल्दी से कुछ आई मीन जल्दी से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने का हमें ज़्यादा होप नहीं लग रहा है.
तो वहाँ की जो ड्राइवर्स हैं, वी आर लेस पॉजिटिव। वहाँ पे स्टेबिलिटी है मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट्स में। तो जो चाइना की जो गवर्नमेंट ने जो एक्टिविटी किया है कुछ स्टॉक मार्केट को लेके, वहाँ से वहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी आ सकती है। बट एकदम सा एक अपमूव जैसे नहीं लग रहा है चाइनीज मार्केट्स को लेके। तो आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट अक्टूबर में एक जब ऐसा लगा कि चाइनीज मार्केट्स में थोड़ी तेजी आ रही है, तो फॉरेनर्स ने काफी पैसा यहाँ से निकाल के या इंडियन मार्केट से निकाल के चाइनीज मार्केट्स में डाले थे। पर अभी लग रहा है कि क्योंकि वहाँ की जो हालत है वो जल्दी से बदलने नहीं वाली है, तो फॉरेनर्स फिर से धीरे-धीरे इंडियन मार्केट्स में वापस इन्वेस्ट करने वाले हैं। आई थिंक ये एटीट्यूड लेके हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कहानी है वो एकदम एक स्ट्रक्चरल कहानी है। स्ट्रक्चरल का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म पैरामीटर्स जो काफ़ी अच्छी है, एंड हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी रेज़िलिएंट रह चुका है। अम, तो अगर हम आई मीन इन्फ्लेशन से लेके फिस्कल सिचुएशन से लेके ग्रोथ, ये सब जो आई मीन ये सब जो बातें हैं, इट इज़ वेरी गुड, इट्स वेरी स्ट्रांग इन इंडिया। एंड हमारी जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है उससे हम वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इवन ये 5.5% की जो ग्रोथ रेट पकड़ के भी हम दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। Not good enough for us. We want to see higher, definitely, but we are still the fastest growing economy in the main economy in the world. Um, and आगे जाके भी I think that is likely to continue to be the case, because um, ये फंडामेंटल जो है वो बदलती नहीं है। हमारी what we have done in the last 10 years to structurally enable growth, all the measures जिससे हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह इम्प्रूव हो चुका है, दैट इज नॉट चेंज्ड। एंड आई एम वेरी कन्विंस्ड दैट वी आर एट द स्टार्ट ऑफ अ मल्टी ईयर कैपेक्स साइकिल। वी आर सीइंग इट इन रियल एस्टेट साइकिल आल्सो ग्रोइंग। एंड इसके अलावा भी हमारी जो इकोनॉमिक और ये यूनिकॉर्न्स और एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट जो है इंडिया में बहुत बहुत बॉयंट है। इंडिया में सबसे ज्यादा आई मीन वन ऑफ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूनिकॉर्न्स है, जिसका मतलब ये है कि मेनी अनलिस्टेड कंपनीज है आज के रेट में, जहाँ पे काफी डायनामिज्म आ रही है। एंड वी आर सीइंग दैट ऑल ऑफ दिस मींस दैट द आउटलुक इज लुकिंग गुड फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, import substitution, and if we add this to a robust macro parameters, तो फिर I think the outlook still is one for structural growth. So we are very positive that ये जो चल रहा है, it is a more short term kind of a down cycle, and we'll get into exactly क्या हुआ है, why is it that ये slow down हुआ है. Um, Jumping right into that, I think we can see that थोड़ा activity slow down आ चुका है. So whether you look at it in terms of traffic at major ports, yeah, whether it is electricity consumption, some credit growth, yeah, oil demand. So in some may, particularly in the first half of this year, we have seen a bit of a slowdown. But on the second side, we can also say that थोड़ा हायरिंग एक्टिविटी में, जैसे आईटी सेक्टर्स में, नॉन आई मीन आईटी सेक्टर्स में पर्टिकुलरली ये डाउन टर्न चल रहा था पहले। अभी तो एक थोड़ा वी आर सीइंग अ बिट ऑफ एन इम्प्रूवमेंट, एंड डेफिनेटली rural FMCG is growing faster than the urban FMCG, so that is another sign that is very good for the economy. तो फिर if all these are looking good, तो ऐसा क्या हुआ है कि that the economy has seen such a major slowdown? सिंपल एक ग्राफ में अगर बता दूं तो ये कहानी यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैपेक्स है वो 15% से डाउन है, और पहले 3 महीने की बात करेंगे तो फिर 35% डाउन था। तो दैट इज द मेन रीजन। ये इलेक्शन की वजह से मई जून जुलाई में एकदम कुछ ऑर्डरिंग नहीं हुआ है, एंड वहां से लेके गवर्नमेंट कैचअप ही कर रहे हैं। तो इसका बैकड्रॉप यही है, एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैपेक्स has been the major driver for the economy over the last 3 to 4 years at least. So, investment cycle in India has been driven
by central government capex. सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल के गवर्नमेंट की जो कैपेक्स है वो कुछ 4 साल पहले 3 लाख करोड़ का था। वो 3 लाख करोड़ हर साल कैपिटल प्रोजेक्ट्स में डालता था। बस 4 साल में वो 3 लाख करोड़ अभी इस साल की बजट में कह रहे हैं कि 11 लाख का एक्सपेंडिचर करेंगे। वो कुछ 35 to 40% हर साल की जो ग्रोथ पिछले 3-4 साल में अचानक से इस साल में फर्स्ट हाफ 15% का डी ग्रोथ दिखा रहा है। इसका असर आप समझ ही सकते हो कि ऐसे लगेगा इकोनॉमी की जहां से एक टेलविंड आ रहा था, एक फोर्स जो इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा था, अचानक से एक ब्रेक बन चुका है। तो उसकी वजह से वी आर सीइंग दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज स्लो डाउन। और अगर आप जीडीपी देखा डेटा भी पढ़ोगे तो फिर उसमें इन्वेस्टमेंट के जो स्लो डाउन है उसकी वजह से ही मेजर स्लो डाउन आ गया है। तो सवाल ये उठता है, तो फिर अभी क्या करें? क्या क्या होने वाला है? क्या हो सकता है आगे? हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि आगे जाके ये गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू मेक फुल एफर्ट टू कैच अप। तो अक्टूबर और नवंबर में थोड़ी बड़ा आई मीन थोड़ी एफर्ट्स चल रही है, बट इट इज़ नॉट येट कॉट अप। ऐसा लग रहा है कि फोर्थ क्वार्टर में पूरा मेहनत लगाएँगे गवर्नमेंट, पूरी मेहनत लगाएँगे गवर्नमेंट, और they it will try to get us closer to the number at least. So we are in a we think that this ये -15% है, अगर बजटेड एस्टिमेट को भी पहुंचा और उसको बीट नहीं कर पाया तो ठीक है, बट अगर इसको अगर बजटेड नंबर भी पहुंचे तो फिर सेकेंड हाफ में 30% का ग्रोथ आ जाएगा। 30% का ग्रोथ अगर आ गया तो फिर मार्केट्स काफी अच्छे, इकोनॉमी की ग्रोथ में काफी मोमेंटम देखने को मिलेगा। एंड वी विल देन बी इन अ पोजीशन जहाँ पे अ, हमारी जो सीक्वेंशियल मोमेंटम डाउन हो चुका था पिछले क्वार्टर में, वो यहाँ से बढ़ना शुरू करेगा। एंड फिर FY26 जो है कि जो कहानी है, दैट विल लुक अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग, दैट विल लुक अ लॉट मोर बिलीवेबल। सो एंड हमें ये भी उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है वो तो सिर्फ एक कहानी है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे और इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे तो याद रखना इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअली प्राइवेट कॉर्पोरेशंस जो है और हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, जिसका मतलब है रियल एस्टेट, ये दो ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द इन्वेस्टमेंट बुक है। तो फिर गवर्नमेंट एक्चुअली इज अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द एंटायर पीस, एंड हमें देखना चाहिए कि प्राइवेट कॉर्पोरेशंस का एक्सपेंडिचर कैसे अभी चल रहा है। एंड वहाँ पे भी थोड़ा अच्छा न्यूज़ देखने को मिल रहा है कि वी हैव सीन अ पिकअप इन द कैपेक्स सैंक्शंस। इसका मतलब ये है कि जो बैंक्स सैंक्शन करती है फॉर द एंटायर book for the investments to be made, that has been increasing very very sharply in the last 2 years. अब ये सवाल मुझे बार बार आता है कि नहीं, एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर नहीं लग रहा है कि ग्रोथ हो रहा है। एंड कुछ स्लाइड पहले भी मैंने कहा था कि क्रेडिट ग्रोथ में कुछ तेजी नहीं दिखाई दे रही है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, एंड ऐसा व्हाई इज दिस नॉट येट ट्रांसलेटेड? I think the main reason that this is not yet translated is very simply that हमारी जो corporates हैं वो काफी कैश पे लेके बैठे हैं। इट इज देयर द बैलेंस शीट जो है इसकी काफी अर्निंग्स डीलेवरेजिंग हो चुका है। सो अगर हमारी if we look at the leverage on the balance sheet, it is still at the lowest level. काफी कैश फ्लो जनरेशन हो रहा है, एंड एज अ रिजल्ट the companies are now using the cash flows to generate to deploy the capex. और पिछले 2 सालों में अगर देखेंगे तो फिर द कैपेक्स हैज ग्रोन बाय 15-20% ओवर द लास्ट 2 इयर्स। तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही है, बट क्रेडिट ग्रोथ विल बी द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ फॉर द प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स। व्हाट इज आल्सो इंटरेस्टिंग इज दैट ये कैपेक्स ग्रोथ जो है ये हर किस्म के प्रोजेक्ट में दिखाई दे रहा है। जैसे छोटी सी प्रोजेक्ट्स फ्रॉम लेस देन 100 crores टू मोर देन 5,000 crores in terms of projects. Across the board, we are seeing a pickup in the kind of projects, and that means that going forward, we should imagine that
दिस इज रियल। ये जो है ये होने वाला है, हमें काफी कॉन्फिडेंस है अगर ये सारे डेटा पॉइंट्स को देखेंगे और गौर से पढ़ेंगे, तो अगले 2-3 सालों में वी विल सी अ पिकअप। अब ये सवाल उठता है कि ठीक है, ये प्रोजेक्ट्स लग रहा है कि बढ़ रहे हैं, पर कहाँ कहाँ ये कौन से सेक्टर्स में बढ़ रही है? अम, हम इसको दो तरीके से देखते हैं। वन इज दैट यू लोok at कन्वेंशनल सेक्टर्स। कन्वेंशनल सेक्टर्स का मतलब जहाँ पे अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करेंगे, तो फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज रनिंग स्लाइटली हायर देन लॉन्ग टर्म एवरेजेस। तो जहाँ पे भी आज के रेट में यू हैव कैपेसिटी, यू वांट टू एक्सपैंड इट, you are able to clearly see that there is the need to do the expansion. And वहाँ पे we are seeing that there's going to be a capex cycle जो ग्रोथ की वजह से आ रही है। बट ऐसा एक दूसरा सेक्टर भी है, अगर हम इमर्जिंग सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, तो वी आर सेइंग दैट नो, इट्स नॉट जस्ट ये रिप्लेसमेंट साइकिल जो हम जैसे हम कहते हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की वजह से हम वी आर लुकिंग एट न्यू सेक्टर्स जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, न्यू सेक्टर्स। तो एक एक एग्जांपल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी इन्वेस्टमेंट्स चल रही है। Definitely, if you look at one of the biggest success stories in the Indian manufacturing in the last 5 years, it has been mobile phones. Jahan Apple now, um, I don't think many people, whenever I ask this question, ki who is the largest employer in the blue collar ecosystem, factory ecosystem में आज के डेट पे who is the biggest employer in the country, आज के रेट में इट इज एप्पल्स इकोसिस्टम। एप्पल का जो इकोसिस्टम और एप्पल और उनके वेंडर्स का जो इकोसिस्टम है, दैट इज द लार्जेस्ट ब्लू कॉलर एम्प्लॉय इन द वर्ल्ड, एम्प्लॉयर इन इंडिया। इट हैज मोर देन 2 लाख पीपल विच इट एम्प्लॉयज, एंड 5 साल पहले ये ना के बराबर ही था, जीरो के बराबर ही था, इट वाज लाइक जीरो। सो वी आर प्रिटी पॉजिटिव दैट अगर इतनी कम टाइम में इतनी प्रगति हो सकती है, तो फिर दीज न्यू सेक्टर्स जिसके बारे में हम सोच भी नहीं रहे हैं, इनमें जब इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएंगे, तो फिर वी कैन सी अ लॉट मोर ग्रोथ कमिंग इन। सो इट इज अ बिट अबाउट द इट इज अ बिट अबाउट इमेजिनिंग कि व्हाट आर द न्यू अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर कमिंग। सेमीकंडक्टर्स को लेके $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान किया गया है, पर $20 बिलियन काफी बड़ी रकम है, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं हम। बट वी आर ऑल्सो सेइंग दैट ये भी काफी छोटी है। अगर पूरी दुनिया की बात करेंगे, तो सेमीकंडक्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअली $800 बिलियन की होती है। आई मीन वी आर लुकिंग एट $800 बिलियन बीइंग इन्वेस्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 5 years इन सेमीकंडक्टर्स, और हम $20 बिलियन के लगा रहे हैं। तो डेफिनेटली वी आर जीरो राइट नाउ इन सेमीकंडक्टर्स, वी नीड टू चेंज दैट। So we are starting with this small little investment in semiconductors. So that is one more space where we think that we will start seeing new investments coming. But apart from that, these are some of the other new sectors which are coming. Electronics को लेके वैसे भी that is shown in our stock markets also, jahan pe we have electronic manufacturing systems doing very well. Those companies have shown excellent growth in the last 3 to 5 years, and they have been very attractive companies to look at, and we are still very small in this space. आगे जाके नई सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी काफी इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, एंड वी थिंक देयर इज अ लॉट मोर टू बी डन इन दीज इन्वेस्टमेंट in the investments here as well. Just coming briefly to अगर consumption की बात करेंगे, तो फिर I think what we need to know is that consumption has been growing faster at the premium end. Um, this is been true so far. Urban में थोड़ी अभी slowdown आ चुका है, and um, if you look at the way SUVs have been growing, definitely this has been a trend which has been playing out for a long period of time. इस साल I think there has been a bit of not premium end at least, but urban consumption में थोड़ा slowdown आ चुका है. तो this is showing in numbers like अगर हम बात करेंगे टू व्हीलर्स की, तो that's a split between rural and urban. एंड सितंबर से लेके नवंबर की जो फेस्टिवल सीजन का जो डिमांड देखेंगे, तो फिर टू व्हीलर्स डिमांड हैज ग्रोन बाय 15%. Tractors demand has grown by about 16%, and these are the closest to the rural demand which we can
look at. And that is something which has been growing. That has been a recent phenomenon. But in the longer term, we are more confident that ये premium sector की जो demand है वो वापस आ जाएगी, and it will continue to be a trend which is a um, longer term in terms of runway, क्योंकि we are seeing this, ये जो arithmetic है ऐसी ही चलती है. जब growth in per capita income होता है तो फिर we see that some of these premiumization stories play out very very well. We have seen this not just यहाँ पे which where we are positive in India, but बाकी देशों में भी ऐसे ही trend देखने को मिलता है. So that is an other trend जहाँ पे हम पॉजिटिव हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट रियल एस्टेट साइकिल को लेके भी हम पॉजिटिव हैं, क्योंकि वी हैव सीन दैट द इन्वेंट्री इज स्टिल वेरी वेरी लो. वी हैव सीन सम शॉर्ट टर्म नॉइज, क्योंकि Q2 में भी यहाँ पे कुछ स्लो डाउन आ चुका था, एंड Q1 Q2 में यहाँ पे भी थोड़ा स्लो डाउन आ गया था. But we think that this is short-term noise. It's not something we need to be worried about going forward. We are seeing that property prices are also picking up, which is a sign that inventory is also low. And it's going to support fresh investments into the real estate space. The other thing with real estate is that we are positive that आगे जाके this is going to be something which becomes much wider. Today, the greater amount of growth has happened at the premium end, but आगे जाके it is likely to be a more broad-based story. Mid sector and affordable housing are likely to show better pickup as well going forward. So when that widens, more volumes happen, and volumes की वजह से you end up seeing not just real estate but एसोसिएटेड सेक्टर्स आल्सो, क्योंकि रियल एस्टेट तो सिर्फ डेवलपर्स की का खेल नहीं है. रियल एस्टेट में बहुत सारे एंसिलरी सेक्टर्स भी चलते हैं, व्हिच इज लॉट टू डू विथ रियल एस्टेट, लाइक प्लम्बिंग से लेके टाइलिंग से लेके प्लाई से लेके इलेक्ट्रिकल्स, फर्निशिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. सो दीज आर ऑल अदर सेक्टर्स व्हिच कैन पिक अप. In terms of sectors, other sectors जहाँ पे हम positive हैं, we are also positive on consumer services. इसका मतलब है food delivery, hotels, restaurants, कुछ segments, retail के कुछ segments भी हम positive हैं. हेल्थ केयर को लेके हम काफी पॉजिटिव है अक्रॉस द बोर्ड, फ्रॉम हॉस्पिटल्स टू डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन कंपनीज. डायग्नोस्टिक थोड़ा एक्सपोजर ले चुके हैं हम. रियल्टी डेफिनेटली हमने बात किया है इसके बारे में. And so these are the areas where we are quite positive on in the Indian market. Going forward, we are also sorry, on the negative side, हम थोड़े metals and mining को लेके negative है. एंड एकदम एफएमसीजी का जो स्टेपल्स पे है की बात करेंगे कंजम्पशन में, उसको लेके हम नेगेटिव है, क्योंकि वहाँ की जो वैल्यूएशन है वो अभी काफी हाई है, एंड वी आर नॉट एज पॉजिटिव ऑन दैट स्पेस बिकॉज ऑफ दिस. अभी थोड़ा वैल्यूएशंस के बारे में भी बात कर सकते हैं, बट उससे पहले हम अर्निंग्स के बारे में बात कर सकते हैं. आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस वेयर we have seen a disappointment has been in the earnings growth. This is a graph of what the Nifty earnings consensus growth was at the start of the year. ये FY25 का जो एक्सपेक्टेशन था 16% पे चल रहा था, बट आज के रेट में अगर देखेंगे तो ये नंबर जो है इट हैज बिकम as it has fallen to 9%. So that is one of the main reasons why it has not the markets have seen a bit of a weakness. And I've already explained the reasons why. It's been linked to a lot of the capex cycle. Q2 की जो GDP growth है उसकी वजह से. But going forward, we are very positive on the markets for one more reason. One is that the other reason is that दिस इज अ मार्केट जहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो सेक्टर्स की वजह से ग्रोथ आ रही है. वी आर सीइंग ग्रोथ अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स. तो इंडियन मार्केट्स टुडे, अगर अर्निंग्स ग्रोथ के बारे में देखेंगे तो इट इज अमंग द मोस्ट ब्रॉड बेस्ड अर्निंग्स ग्रोथ व्हिच वी हैव सीन इन 20 years. एंड इससे
इससे क्या होता है कि we see a lot more opportunities for investment. We see that we are able to find many investment opportunities. We're able to find bottom up stock picking के लिए ये market बहुत अच्छी है फिर. And we don't need to chase after आज का जो hot stock है उसके पीछे भागना है. So we tend to think that this is something which we can be a lot more positive on. In this kind of a market, I think what's important, therefore, is to be very valuation conscious, and that is how we tend to be. Um, we have seen that the valuations जो है it has been थोड़ा elevated हो चुका था, but now we have seen a bit of correction from the peak of the markets. From but if you look at the broader market, ऐसे NSE 500 की बात करेंगे तो फिर definitely there's a bit more there is a bit more of a overvaluation which is still there. Having said that, एक important interesting data point ये भी है कि uh, अगर हम मिड एंड स्मॉल कैप की बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि इंडेक्स लेवल पे तो वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू द ऑल टाइम हाई या 5 से 7% फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑल टाइम हाई बट एक्चुअली mid and small cap may, if you look at the total amount of correction which has happened, so more than half of the stocks have fallen by more than 20%. And that is again pointing to the fact that we see a lot of opportunities to invest. We see a lot of growth opportunities for our markets, and this is also pointing to the fact that अगर stock picking करना है तो फिर the market below the surface is starting to look very interesting. It is also worth remembering that this is not the first time. This is not the first time that something like this is happening because if you remember October 2021 to March 2023, तभी ऐसे कुछ हालात थे जहाँ पे the headline level पे we were looking like it is not the markets are not doing much, but actually below the surface काफी change चल रहा था. तो the winners of the previous 2 years then made way for new winners for the next 2 years because stock picking was possible. ऐसे ही हमें भी आज लग रहा है कि this is one more place where it's likely that we are seeing a churn and a change into the newer sectors. One other sector which we have mentioned, which is large and which of course is very topical always, is the banking sector. We are very very positive on the banking sector. We have taken fairly large overweight on the banking sector, and this feels like एक sector जहाँ पे growth और valuation का जो मेल है that is looking very very perfect. तो हम स्टॉक पिकर हैं एंड दिस इज द मार्केट जहाँ पे स्टॉक पिकिंग जो है वो काम करता है एंड इट इज वर्किंग वेरी वेल फॉर अस. So I think that is that's what we are looking at for in terms of the markets. India continues to be uh, a market where both our GDP share and the world market cap share is continuing to keep on rise. I expect that to continue to be the trend. Risks तो हमेशा रहेगी. We'll see about how the global situation plays out. But nevertheless, we are very very positive on the medium term outlook for the markets. This is a phase of consolidation. In these times, we should be looking to accumulate and prepare for the next upward move of the market, which will come, if not sooner, then definitely later. Um, so that's a bit on the market outlook on our funds itself. I think if I have to speak about a few of our flagship funds which have been doing very well, I would speak about the Franklin India FlexiCap. This is one of the funds definitely which is a core category fund. It has been around for more than 30 years with extremely consistent performance over all market cycles. So we are very we have been very happy with the consistency which this fund has been able to deliver. We target that kind of a consistency also. तो हमारा goal यही है कि we should be relentlessly looking at Q1, Q2 kind of performance. ये एक ऐसा fund नहीं है जहाँ पे you will see एकदम going for very uh, high risk positioning of the overall fund.
जिससे शायद शॉर्ट टर्म में very extravagant gains you can get, but eventually it can end up uh, causing a lot of volatility in the investor portfolio also. So this is about consistency over long term period, and Franklin India FlexiCap has delivered it. It has shown that ऐसा performance possible है over long periods of time. Um, we also spoken a bit about the smaller companies in terms of what the outlook is likely to be in terms of valuations at least. But see the one of the things to remember is that we are positive on the capex cycle, and the industrial and capex space is something which is full of small caps, or rather, small caps are full of industrial and capex related names. So, if India is to grow in the next 3 to 5 years, then this is something which will benefit small caps. Valuations are slightly high, but I think in this consolidation period, I think we are again setting ourselves for up for something like what happened in March 2023. March 2023, I remember it was after the 1.5 years of consolidation, the markets had reached very, very interesting levels for small caps, despite looking like small caps are not doing too much. But that is a kind of setup which I think we are positioning ourselves. So this is the time to accumulate smaller companies, fund kind positions for longer term investors. So definitely always small cap investing should be considered in the context of a 7 year time horizon, and we should be looking at it here as well. Another couple of funds which are from the Franklin Templeton space is one is the focused equity fund, which is something which is our expression of the 30 best ideas. तो इसमें because you're more concentrated, less diversified, the performance tends to be a bit more volatile than the Franklin India Flexi Cap. Um, but what tends to happen, and therefore you can see like very, very good short-term performance also, and then the performance may dip a bit into Q3 also from time to time. But what needs to be remembered here is that in the long run, this volatility is something which is rewarded and has been rewarded at least. So if you compare flexi cap and focused equity. Longer term, mein, if you're able to stomach the volatility and just ride through that, then the focused equity delivers good returns, maybe even slightly better returns than the flexi cap. But the price is that ये short term volatility आ जाता है, बीच बीच में self doubt आ जाता है कि नहीं ये fund underperform कर रहा है क्या, whether has this lost its touch. But we should be looking at it more from a longer term perspective, and then you're able to um, appreciate this fund in particular. And finally, I think we have a very different kind of fund, which is the Templeton India Value Fund. We are bottom up stock pickers. We consider valuations when we are investing, and the Templeton India Value Fund, जो है, it is it's a fund which looks at value in a very, very unique way. Of course, Templeton is associated with value itself. John Templeton जो थे, definitely is known for among being the pioneer of value investing. So it is a fund which draws on that legacy. It is a fund which has been been true to the label in terms of having lower P than the rest of the uh, market for sure. But it's also something which looks at the definition of value in the Indian context. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सस्ते stocks होनी चाहिए. Like absolute value एक concept है, relative value एक और concept है, special situations एक और concept है value का. So we look at it in a slightly holistic way, but the outcome is still the same, that we are betting on companies where there's deep value, not expensive stocks in that way. So these are four funds for your consideration in this market where we are in a consolidation, and it's a great time to start accumulating each of these funds. So happy to take a pause now and take some questions at this point. Sure, Hari. Thank you so much for sharing the insights. Dear all, we are open for Q&A. You can click on either chat or Q&A and post your questions.
Yes, a question from Jayan. Yes, I think we can mail that later then. What do you think about question is about what do you think about gold as an investment? So gold is a great diversifier in the portfolio. So we've been doing a fair bit of uh, work around gold as well, and it's a what we have come to a conclusion is that it is at certain points of time that the gold does particularly well, and those are the time when uncertainty is high, when inflation also is tends to be a bit high, or the more really when there is more uncertainty around growth rather than about any particular direction about growth. So period like now, if you believe that there is more uncertainty in the markets, then we should uh, gold will help the portfolio at least. It's one of those which is so uncorrelated from the rest of the asset classes that you want to have it in. You always like to have asset classes which are uncorrelated with the rest of the your assets in your portfolio. So I mean, I think it deserves a place in the portfolio. I never tend to take it as a core wealth creation kind of an investment, because for that I think equities in the longer term is still better. Question is on the Ukraine war effect. See, Ukraine war, actually, I have a slightly more optimistic kind of a perspective that, if you look at what President Trump is saying, the message which we have been able to pick up at least is that there's a major determination for him to end the war very, very quickly. So whatever the deal is, and I think the popular perception or the common view now in US is that we don't want to be supporting these wars in far off places with our budget anymore. um, हम क्यों खर्चा करें जब वो लोग लड़ रहे हैं? I think that is the attitude which is now taking place, and the President Trump has definitely made use of that and taken advantage of that in terms of his election campaigning. So I think that there's a possibility, a non-zero possibility that in maybe 3 to 6 months we see some kind of headline saying that some kind of a ceasefire is being we're close to getting some kind of a ceasefire, and that could be much better than what is there right now. What I can say is that it's unlikely that the US is going to support an escalation in the war, at least going forward. So we are closer to some kind of a wind down of the Ukraine war, actually. Question is, what do you think about of the algorithmic trading allowed to institutional investors? I think this question is pertaining to SEBI's. Is it SEBI or is this a broader question on generally algorithmic trading? Because algorithmic trading has been allowed to institutional investors for quite some time. Um, now, I think that it's been going on for a long amount of time. The Indian investor has been using it. So Indian institutional investors have been using it for years, to be honest. I think recently SEBI has talked about creating some safeguards in opening such methods to retail investors also. Um, and that is going to be something slightly different, but as long as the safeguards are good and they're available, then that should be not a bad thing. Um, it's good that there's a consultation happening around that. But in terms of algorithmic trading for institutional investors, as long as it's not advantageous to any one, there are no systemic advantages to any one institutional investor. I think it's something which is okay. Is there any fund good for investments in semiconductors, microchips, etc.? So, so I think what we so semiconductors and microchips right now in India, not quite, unfortunately. I think in India still we are in a situation where uh, it's just a very, very nascent stage right now. So there are a few stocks which at most which you can play. Some of the investments are coming in unlisted companies. So here at least there's not much which you can play, but internationally, there may be some, but nothing really listed. I think in the Indian markets right now. At best, I guess broader
you can look at we have a Franklin US Opportunities Fund, which is very growth oriented, which does invest in semiconductors. We have a overweight position on some of the semiconductors names there. So that may be one way you can think about it. But at least in the Indian context, the whole space is still opening up only now. I think, Hari, you have answered all the questions that has been put up by uh, the attendees. So uh, I think before we wind up, your last thoughts, and then probably then we can wind up the call. Sure, Saju. I think, as I said, we are in a period of consolidation, and I would say that this is a welcome period of consolidation. We were The market was running fairly hot before June, and to be honest, we were getting a bit concerned about that. So, in that context, a bit of cooling off or consolidation in the market is something which is slightly welcome. The slowdown in the economy, which we have seen, we believe is transitory. That we should come out from the other side stronger and looking at new drivers of growth. In all this, I think we also note that there are a lot more companies hitting the market. The IPO market is pretty strong. It's bringing new companies and new interesting business models to the market. And Indian market remains very dynamic. It's a market which is being driven by earnings growth. This is not a margin market which has been driven by just pure massive valuation expansion. It has got strong underpinnings of strong economic growth, very healthy, among the top earnings growth in the world right now. And I expect that these dynamics will start making themselves even more apparent in 2025 as well. And so this is a great time to keep accumulating your units of mutual funds and prepare for the longer term. Yeah. So thank you so much, Hari, for taking out the time for us. And I'm sure these insights have definitely helped our customers. And so with this, we conclude this call. Thank you, Hari, once again. Thank you.